Hi guys, I hope you all are doing well. Today we will solve exercise 3.3, so let's solve it together. Let's read the first question. Solve the following pair of linear equations by the elimination method and the substitution method. Okay, सो गाइस सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोगों ने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 के सोल्यूशन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं और जो कॉन्सेप्ट वीडियो हम लोगों ने रिकॉर्ड किया था मतलब मैंने रिकॉर्ड किया था एक्सरसाइज 3.2 के पहले एक वीडियो हम लोगों ने अपलोड किया है विच इज़ कॉन्सेप्ट वीडियो ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। वहाँ भी हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड देखा है ध्यान से। तो इफ़ यू वांट आप वो दोनों वीडियोस देख सकते हो टू नो हाउ टू सॉल्व यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस वीडियो के अंदर आई विल ओनली सॉल्व एलिमिनेशन मेथड। इस वीडियो के अंदर आई विल ओनली सॉल्व यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। सो लेट्स डू इट टुगेदर। ओके, सो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? x plus y equal to 5 and 2x minus 3y equal to 4. 2x minus 3y equal to 4. ठीक है, सो लेट्स फर्स्ट डिसाइड। पहले आप ये डिसाइड करो कि आपको एलिमिनेट किसे करना है। तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे एलिमिनेट करना है y को। अगर y को एलिमिनेट करना है तो नीचे सेकेंड इक्वेशन के अंदर y का कोफिशिएंट है -3, तो ऊपर भी y का कोफिशिएंट या तो -3 होना चाहिए या +3 होना चाहिए, दैट्स वाई मैं फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा ऑन बोथ द साइड्स। दैट्स वाई आई विल मल्टीप्लाई द फर्स्ट इक्वेशन बाय 3 ऑन बोथ द साइड्स। सो व्हाट डू आई गेट गाइस? आई गेट 3x plus 3y equal to 15 and second equation as it is 2x minus 3y equal to 4. So guys, अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए मैं ऐसा कौन सा ऑपरेशन करूँ, what do I do so that I get rid of y, so that y eliminate हो जाए। मैं ऐसा क्या ऑपरेशन करूँ so that y मेरा eliminate हो जाए। So if I add them तो y eliminate हो सकता है। कैसे हो सकता है eliminate? 3x plus 2x क्या होगा? 5x, ठीक है, and 3y plus minus 3y होगा 3y minus 3y which is 0, तो ये हो जाएगा 0 and 15 plus 4 is 19, so 5x equal to 19, x equal to 19 by 5, now x equal to 19 by 5 आप किसी भी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर सकते हो। x equal to 19 by 5 आप किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। आप इस इक्वेशन में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, इस इक्वेशन में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, या इस इक्वेशन में जो हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन था क्या था वो? x plus y equal to 5, यहाँ भी आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो आइए सब्स्टिट्यूट करते हैं। 19 by 5 plus y equal to 5, y equal to 5 minus 19 by 5, so y will be 25 minus 19 divided by 5, हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। so y equal to 25 minus 19 is 6 by 5, y equal to 6 by 5, तो हमारा सोल्यूशन आ गया गाइस। द सोल्यूशन इज x equal to 19 by 5 and y equal to 6 by 5, ठीक है। सो बहुत ईजी था ये गाइस, बहुत ज़्यादा ईजी था ये। आई होप आपको समझ में आया हो एलिमिनेशन मेथड। नाउ आई एम गोइंग टू इरेज दिस एंड वी विल डू द सेकेंड वन। सो लेट्स इरेज इट। व्हाट इज द सेकेंड वन? दिस इज योर सेकेंड क्वेश्चन which is 3x plus 4y equal to 10 and 2x minus 2y equal to 2। अगेन आपको पहले डिसाइड करना है कि आपको एलिमिनेट किसे करना है। अगर आप ध्यान से देखो तो y is the thing which you should eliminate। ये आपको कैसे ध्यान में आएगा? अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ ऑन बोथ द साइड्स तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा 4x minus 4y equal to 4 and the first equation will be 3x plus 4y equal to 10। Now what do I do so that y eliminate हो जाए? अगर मैं इसको ऐड कर दूँ
अगर मैं इसको ऐड करूँ, सो दिस विल बिकम 4x प्लस 3x 7x, 4x प्लस 3x 7x माइनस 4y प्लस 4y 0, माइनस 4y प्लस 4y हो गया 0, एंड 4 प्लस 10 हो गया 14, 4 प्लस 10 हो गया 14. तो मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड में सारे टर्म्स को ऐड कर दिया, राइट हैंड साइड में सारे टर्म्स को ऐड कर दिया. सो 7x इक्वल टू 14, 7x इक्वल टू 14, x इक्वल टू 14 डिवाइड बाय 7 विच इज़ 2, x इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय 7 विच इज़ 2. नाउ x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 आप किसी भी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर सकते हो, x इक्वल टू 2 आप किसी भी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर सकते हो. तो जो मेरे पास पहले ओरिजिनली इक्वेशन था मैं उसके अंदर सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, मैं उसके अंदर x को सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ. सो आई हैड 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, ये इक्वेशन मेरे पास पहले से था. यहाँ मैं x को सब्सटीट्यूट करूँगा 2, यहाँ मैं x को सब्सटीट्यूट करूँगा 2. सो 2 टाइम्स 2 माइनस 2y इक्वल टू 2, 4 माइनस 2y इक्वल टू 2. नाउ आई एम शिफ्टिंग 2 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड माइनस 2y ऑन द राइट हैंड साइड. तो क्या बनेगा, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2y, 2 इक्वल टू 2y, 1 इक्वल टू y, 1 इक्वल टू y. तो ये हो गया आपका सोल्यूशन, ये हो गया आपका सोल्यूशन, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1. This is your final answer. This is your final answer. I hope you understood this. I hope you understood this. Now I'm going to erase this. Now I'm going to erase this, and we will solve the third one. We will solve the third one. What is your third question, guys? What is your third question? Third question is this. So 3x minus 5y minus 4 equal to 0 and 9x equal to 2y plus 7. ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे टर्म्स को. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2. सो योर इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, अगर मैं 4 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दूँ तो इक्वेशन 1 बिकम्स 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, 3x माइनस 5y इक्वल टू 4. एंड अगर मैं 2y को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दूँ, अगर मैं 2y को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दूँ, देन योर इक्वेशन 2 will be 9x minus 2y equal to 7, 9x minus 2y equal to 7. अगर आप ध्यान से देखो तो सबसे easiest thing जिसको eliminate किया जा सकता है सबसे आसानी से वो है x. कैसे? If I multiply equation 1 on both the sides by 3, अगर मैं इसको 3 से multiply कर दूँ दोनों साइड में तो मेरा काम बन जाएगा. कैसे बनेगा मेरा काम, आइए देखते हैं. So equation 1 will become 9x minus 15y equal to 12. 9x minus 15y equal to 12. And equation 2 becomes 9x minus 2y equal to 7. 9x minus 2y equal to 7. अब मैं क्या करूँ कि ये मेरा एलिमिनेट हो जाए x. अब मैं ऐसा क्या करूँ कि x एलिमिनेट हो जाए. तो let's subtract. How do I subtract? 9x minus 9x is 0, 9x minus 9x is 0, and then minus 15y minus 2y, minus 15y minus 2y equal to 12 minus 15, 12 minus 7, sorry, not 15, 12 minus 7. So minus 15 plus 2y equal to 12 minus 7 is 5. So minus 13y equal to 5. And y equal to 5 by 13 with a negative sign. Y equal to minus 5 by 13. ये हो गया आपका y का वैल्यू. अब आपको x का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू. तो आप इसको, जो मेरे पास पहले इक्वेशन था ओरिजिनली ये वाला, यहाँ आप उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो. आप अगर चाहो तो सेकंड इक्वेशन के अंदर भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, आपको आंसर सेम ही आएगा. सो लेट्स डू इट. 3x minus 5y equal to 4. 3x minus 5y equal to 4. Now I'm going to do what I'm going to do. I'm going to do 3 times x minus 5 times minus 5 by 13 equal to 4. So 3x plus 25 by 13 equal to 4. 3x equal to 4 minus 25 by 13. 3x equal to 13 times 4 is 42 minus 25 divide by 13. 3x will be 27 by 13. X equal to क्या होगा guys? 3 times 1, 3 times 9, right? So x becomes 9 by 13. X becomes 9 by 13 and this is your solution. So your answer
your answer is x equal to 9 by 13 and y equal to minus 5 by 13. x equal to 9 by 13 and y equal to minus 5 by 13. आप इसको थोड़ा ध्यान से देख सकते हो. मैंने पहले टर्म्स को रीअरेंज किया. रीअरेंज करने के बाद मैंने पहले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया. पहले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद में मेरे पास जो दो इक्वेशंस थे मैंने उनको सब्ट्रैक्ट किया और सब्ट्रैक्ट करने के बाद में मैंने y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया x में. मैंने y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया इक्वेशन 1 के अंदर 3x माइनस 5y इक्वल टू 4 के अंदर, और वहाँ से मुझे मिला x का वैल्यू, y का वैल्यू पहले मिल गया था. सो दिस इज हाउ यू डू एलिमिनेशन मेथड. Now I'm going to erase it and we are going to solve the last question. So this is it. Now what is the last one? Last one क्या है guys आपका? This is your last one. x by 2 plus 2y by 3 equal to minus 1 and x minus y by 3 equal to 3. Okay. अगर आप देखो तो इक्वेशंस थोड़े से सिंप्लीफाई किए जा सकते हैं. अगर आप ध्यान से देखो तो इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई किया जा सकता है. कैसे किया जा सकता है? यहाँ पर है डिनोमिनेटर 2, यहाँ है डिनोमिनेटर 3. 2 और 3 का एलसीएम होता है 6. 2 और 3 का एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या 2 इंटू थ्री होता है 6. तो मैं पहले क्या करूँगा, मैं पहले दोनों साइड में 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ताकि मेरा इक्वेशन थोड़ा अच्छा दिखे. यहाँ पर है x डिवाइड बाय 1, तो 1 इंटू 3 इज 3, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा 3 से लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी. So what do you get? Let's look here. So you get 6x by 2 which is 3x plus 2y by 3 into 6 which is 4y equal to minus 6. ये हो गया आपका पहला इक्वेशन. और दूसरा इक्वेशन आपका होगा 3x minus y equal to 9. 3x minus y equal to 9. कैसे आया? आप 6 से दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करिए, आप 3 से दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करिए, आपको यही रिजल्ट आएगा. नाउ अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो इसको और सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है. आप इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपका काम बन जाएगा. सो 3x minus 3x becomes 0x and 4y minus y becomes 5y. 4y minus 5y become 5y. So this is 5 times y equal to minus 6 minus 9 minus 15. So y equal to minus 15 by 5 which is minus 3. y equal to minus 3 आ गया आपका one of the answers. Now I will substitute it any one of the equations. तो आप इसको चाहो तो यहाँ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, यहाँ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो. I will choose this one. I'll choose second one. So आपके पास इक्वेशन था 3x minus y equal to 9. So 3x minus 3 equal to 9. 3x plus 3 equal to 9. 3x equal to 6. x equal to 2. x equal to आ गया आपका 2. सो गाइज आपका आंसर आ गया है. आपका आंसर है x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू माइनस 3. x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू माइनस 3. ये है आपका सोल्यूशन जो हम लोगों ने किया एलिमिनेशन मेथड से. ओके, सो यू कैन चेक दिस. आप इन चारों क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हो. सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे करना है ये मैंने पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस किया है. प्लीज गो बैक एंड वॉच दोज वीडियोज टू नो हाउ टू सॉल्व यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू इरेज इट. Great. Now let's do question number 2. What is question number 2? Let's read it. Form the pair of linear equations in the following problems and find their solutions if they exist by elimination method. Okay. So first question क्या है guys? First question है, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1 and it becomes 1 by 2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? So first के अंदर हम बोलेंगे let the fraction be x divided by y. Now what does it say? If we add 1 to the numerator and subtract 1 from denominator, so x plus 1 and y minus 1, then this becomes what? Then it becomes
1, it becomes 1. So this is 1. ठीक है, and it says it becomes 1 by 2 if we only add 1 to the denominator. So x upon y plus 1 equal to 1 by 2 equal to 1 by 2. अब हम क्या करेंगे गाइस, अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. सो दिस थिंग बिकम्स x plus 1 equal to y minus 1. x plus 1 equal to y minus 1. अब y को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कीजिए, 1 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करिए, तो ये बन जाएगा आपका x माइनस वाई इक्वल टू माइनस टू. एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस टू. सेकेंड वाला क्या होगा आपका 2x इक्वल टू वाई प्लस वन. 2x इक्वल टू वाई प्लस वन. आप y को फिर से लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करिए, सो x माइनस टू वाई इक्वल टू वन. एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू वन. ना हाउ डू वी सॉल्व इट, हाउ डू वी सॉल्व इट. अगर आप ध्यान से देखो तो x का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, यहाँ भी x का कोफिशिएंट 1 है, तो लेट्स सब्ट्रैक्ट देम. लेट अस सब्ट्रैक्ट देम. लेट्स सब्ट्रैक्ट देम. सो 1x minus 1x is 0. 1x minus 1x is 0. And minus y minus minus 2y minus y minus y minus minus 2y equal to minus 2 minus 1 minus 2 minus 1. तो ये हो जाएगा आपका माइनस वाई प्लस टू वाई इक्वल टू माइनस थ्री. वाई इक्वल टू माइनस थ्री. वाई हो गया आपका माइनस थ्री. नाउ आई विल रीसब्स्टिट्यूट दैट ओवर हियर. तो x माइनस वाई इक्वल टू माइनस टू, एक्स माइनस माइनस थ्री इक्वल टू माइनस टू, एक्स प्लस फाइव इक्वल टू माइनस टू, एंड x इक्वल टू वॉट, x इक्वल टू माइनस टू माइनस फाइव, एक्स इक्वल टू माइनस सेवन. एक्स इक्वल टू माइनस सेवन. तो आपका फ्रैक्शन क्या आ गया गाइज, आपका फ्रैक्शन आ गया x बाय वाई विच इज़ इक्वल टू माइनस सेवन अपॉन माइनस थ्री. माइनस सेवन अपॉन माइनस थ्री विच इज़ नथिंग बट सेवन बाई थ्री. विच इज़ नथिंग बट सेवन बाई थ्री. आइए हम इसको एक बार सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर लेते हैं. हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर लेते हैं. तो आपके पास में इक्वेशन वन था, आपके पास इक्वेशन वन था x माइनस वाई इक्वल टू माइनस टू, एंड सेकेंड इक्वेशन था x माइनस टू वाई इक्वल टू वन. एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू वन. सो अगर मैं इस इक्वेशन को कंसिडर करूँ तो x विल बी इक्वल टू वाई माइनस टू, एक्स विल बी इक्वल टू वाई माइनस टू. इसको मैं रीसब्स्टिट्यूट करूँगा यहाँ पर, इसको मैं रीसब्स्टिट्यूट करूँगा यहाँ पर. सो इट बिकम्स y माइनस टू वाई इक्वल टू वन. सो y minus minus 2y becomes minus y equal to 2 plus 1. So y becomes minus y becomes 3, y becomes minus 3, y becomes minus 3. And y equal to minus 3 आप substitute कर दो यहाँ पर. So x will be equal to minus 3 minus 2, x will be equal to minus 5, x will be equal to minus 5. यहाँ पर हमारा x equal to minus 7 कैसे आ गया. एक छोटा सा गलती हुआ है गाइस, एक छोटा सा गलती हुआ है. अगर आप इन स्टेप्स को देखो, तो माइनस माइनस थ्री हो जाएगा प्लस फाइव, और मैंने यहाँ लिखा है माइनस माइनस थ्री हो जाएगा प्लस थ्री, और मैंने यहाँ लिखा है प्लस फाइव. सो यहाँ से छोटा सा गलती हो गया है. सो लेट्स सॉल्व इट अगेन. सो x प्लस थ्री इक्वल टू माइनस टू, x इक्वल टू माइनस थ्री माइनस टू, x इक्वल टू माइनस फाइव. सो द फ्रैक्शन इज x बाय y, which is 5 by minus 5 divided by minus 3, which is 5 by 3. ठीक है. So this is it. आप एक बार ध्यान से देख लीजिए. इन्होंने बोला था कि अगर मैं x को 1 ऐड करूँ, and it said if I subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1, which is this equation. And then it says if we only add 1 to the denominator, the fraction becomes 1 by 2. The fraction becomes 1 by 2, which is this equation. इन दोनों को हमने सॉल्व किया, इन दोनों को हम लोगों ने सॉल्व किया, and the fraction became 5 by 3. The fraction became 5 by 3. So I hope you understood it. I hope you understood it. Now I'm going to erase the thing. I'm going to erase the thing. And we will solve. And we will solve question number 2. We'll solve question number 2. So let's read it together. 5 years ago, Noori was thrice as old as Sonu. 10 years later, Noori will be twice old as Sonu. How old are Noori and Sonu? Okay. So let the age of
Noori be X, let the age of Sonu be Y. Okay, so according to the question, 5 years ago Noori was, अच्छा ये है current age, these are your current age मतलब present में age क्या है, X and Y. So 5 years ago, so 5 years ago age of Noori will be X minus 5 and age of Sonu will be Y minus 5, and according to the question क्या बोल रहा है, Noori was thrice as old as Sonu. Which means X minus 5 is equal to 3 times Y minus 5. X minus 5 equal to 3 times Y minus 5. So X minus 5 equal to 3Y minus 15. And if I shift 3Y on the left hand side, minus 5 on the right hand side, then I get X minus 3Y equal to 5 minus 15. So X minus 3Y equal to minus 10. This is my first equation. Now what is the next line? It says 10 years later. So what will be the age after 10 years, guys? So after 10 years, age of Noori will be X plus 10 and age of Sonu will be Y plus 10. Now let's read the question. The question says after 10 years, Noori will be twice as old as Sonu. So Noori, X plus 10 Noori will be equal to twice the age of Sonu. So X plus 10 equal to 2Y plus 20. Shift 2Y on the left hand side, shift 10 on the right hand side. So X minus 2Y equal to 10. This is your second equation. Now let's write the equations again. You have X minus 3Y equal to minus 10. X minus 2Y equal to 10. What do I do? इसको solve करने के लिए x का coefficient same है, तो let us subtract. So x minus x हो गया 0, minus 3y minus 2y equal to minus 10. Okay, so minus 3y plus 2y equal to minus 20, minus y equal to minus 20, y equal to 20. तो सोनू का एज आ गया 20 years. Now let's resubstitute y equal to 20 in the first equation. So what do I get? X minus 3y equal to minus 10. X minus 3 times 20 equal to minus 10. X minus 60 equal to minus 10. X equal to 60 minus 10. X equal to 50. X will be equal to 50. So Nupur nahi, what was the name? Noori, sorry. The age of Noori becomes 50. The age of Sonu is 20. So these are the present ages of Noori and Sonu. This is your Noori and this is your Sonu. Okay, because that's what we assumed earlier. Noori as X, Sonu as Y. Okay, so this is how you solve it. Again an important question, and I hope I helped you and you got the solution. I hoped I helped you. Okay, now I'm going to erase it. And now we are going to solve the third one. What is the third one? Sum of the digits of a two-digit number is 9. Also, 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digit. Find the number. Very important question, guys. So, the sum of the digits of a two-digit number is 9. So, let's say the two-digit number is xy. Okay. तो इसने बोला है sum of the digit of the numbers is 9. So x plus y equal to 9. ये हो गया आपका पहला equation. Then it says 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. 9 times this number xy, जैसे कि हमारे पास एक नंबर है
लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, दिस इज 29. तो 9 है वंस पे, 2 है टेंस डिजिट. 9 इज वंस डिजिट, यूनिट डिजिट, एंड 2 इज टेंस डिजिट. तो इसको मैं लिख सकता हूँ 20 प्लस 9, इसको मैं लिख सकता हूँ 20 प्लस 9. सिमिलरली xy can be written as 10 times x plus y. Similarly, xy can be written as 10 times x plus y. So what does it say? It says 9 times this number. So if I multiply this number with 9, if I multiply this number with 9, okay, 9 times xy, which is 9 times 10x plus y, 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digit. अगर मैं इसके डिजिट को रिवर्स कर दूँ, ठीक है, लेट मी रीराइट इट. पहली बात तो एक्स वाई कैन बी रिटन एज 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई. अगर मैं इनको रिवर्स कर दूँ, इनको मैं रिवर्स कर दूँ, तो दिस बिकम्स वाई एक्स, विच मीन्स दिस कैन बी रिटन एज 10 टाइम्स वाई प्लस एक्स, 10 टाइम वाई प्लस एक्स. अब क्या बोला इन लोगों ने? 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, विच मीन्स 9 times 10x plus y is equal to 2 times 10y plus x is equal to 2 times 10y plus x. So this is 90x plus 9y equal to 20y plus 2x. Okay, so let's shift this on the left hand side, let's shift this also on the left hand side. So 90x minus 2x becomes 88x, and 9y minus 20y becomes minus 11y equal to 0. Now divide both the sides by 11, क्योंकि 11 से divisible है, simplify करेंगे. तो this is I am doing just for simplification, I am doing only for simplification, I am doing the simplification, क्योंकि 11 भी 11 से divisible है, 88 भी 11 से divisible है. So let's divide both the sides by 11. So you get 8x minus y equal to 0. You get 8x minus y equal to 0. This is your second equation. What was your first equation? X plus y equal to 9. Your second equation was first equation was x plus y equal to 9. Second equation is 8x minus y equal to 0. Now what do? If I add them, then x plus 8x becomes 9x, 8 plus 8x becomes 9x. Y and minus y will be 0. Y and minus y, if you add them, it becomes 0. So 9x equal to 9 plus 0 is 9. तो यहाँ से x will be equal to 1, यहाँ से x will be equal to 1. And if I resubstitute x का value in this equation, then what do I get? I get 8x minus y equal to 0. 8 times 1 minus y equal to 0. So 8 equal to y. तो आपका नंबर क्या था? Your number was xy. The number will be 1818. Okay. So यहाँ पर xy is not x into y. xy एक नंबर है जैसे 18. Okay. So I hope ये आपको समझ में आया हो. बहुत ज़्यादा important question है ये, and I hope you understood it. Okay. Now I'm going to erase it. I would want you to practice this question one more time. Very important question. So let me erase it. Now let's do the fourth one. Let's read it together. Meena went to a bank to withdraw 2000 rupees. She asked the cashier to give her rupees 50 and 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of 50 and 100 she received. Okay. So let Meena got X notes of rupees 50 and Y notes of rupees 100. Okay. So what is it? It says 25 notes in total. Total notes are 25. So X plus Y equal to 25. This is your first equation. And she said the total money she wants to receive is rupees 2000. So 50 rupees के X note, plus 100 rupees के Y notes, should be equal to 2000. Now how do I solve it? Very easy. आप decide कर लीजिए आपको किसको eliminate करना है. तो मैंने सोचा I will eliminate y. तो y का कोफिशिएंट यहाँ है 100. तो I will multiply this whole equation by 100 on the left, 100 on the right. So if you solve this now,
So it becomes 100x plus 100y equal to 2500, and the second equation is 50x plus 100y equal to 2000. Okay, now what do I do? I subtract them. So 100x minus 50x will become 50x. 100y minus 100y is 0, so 50x equal to 2500 minus 2000 is 500, so x is 10. So she got 10 notes of rupees 50. And what is y? मैं ओरिजिनली जो इक्वेशन था उसमें सब्स्टिट्यूट करूँगा. So x plus y equal to 25, x is 10 plus y equal to 25, y equal to 15. So the total 50 rupees note, rupee 50 note are 10, and rupees 100 note are 15. Rupees 100 notes are 15. Again, an important question. Please try it one more time at home. Very important question. Okay. Now I'm going to erase it. Now let's do the last question. Okay. Let's read it together. A lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter. Sarita paid rupees 27 for a book kept for 7 days, while Susie paid rupees 21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. So it says a lending library has a fixed charge and it has an additional charge. So let the fixed charge be x and additional charge by. तो आपका जो कॉस्ट होगा, द चार्ज कॉस्ट विल बी, for 1 day it will be 1x, for 2 days it will be 2x, for 3 days it will be 3x. Fixed charge will be x, additional charge will be y. So let's say cost is m times x. हर एक दिन का एक फिक्स चार्ज होगा, पहले दिन का ये, दूसरे दिन का ये, and additional charge will be y. Now it says for 3 days the charge is 27. So 27 equal to 3x plus y. This is your first equation. And then it says 21 for the book she kept for 5 days. 27 for the book kept for 7 days, not 3 days. For first 3 days. Okay, I think there is small mistake that we have done. Let me erase this small mistake. Okay, if you say, it says first 3 days the charge is fixed. And for the next few days there will be an additional charge. So first 3 days, let's say if she is keeping the book for 7 days, so out of 7 days, for 3 days she will pay fixed charge. Okay, and for the remaining 4 days, she will have to pay an additional charge. Okay, so what is the charge? The charge will be equal to 3 days के लिए fixed charge, 4 days के लिए कोई variable charge plus additional आपको देना पड़ेगा. So the fixed charge जो उसको देना ही पड़ेगा वो कितना होगा guys? Let's say it will be 4x plus fixed charge which is y. Y तो आपको देना ही देना है, ठीक है, y आपको देना ही देना है. So y becomes your fixed charge that you have to pay and x becomes your additional charge. So after 3 days 4 days बचेंगे, 4 days के लिए आपको 4x के हिसाब से चार्ज देना पड़ेगा. So it is 27 equal to 4x plus y. And again it says rupees 21 for the book she kept for 5 days. So again for 5 days, इसमें से
For 3 days she will pay a fixed charge. For 3 days she will pay a fixed charge, and for the remaining 2 days, she will have to pay something additional. So what will happen? The charge is 21. So 2 days, for 2 days she have to pay additional charge 2x, and fixed charge she has to pay y. So now again you have two equations. First equation is 4x plus y equal to 27 and 2x plus y equal to 21. What do I do? Let us subtract these. So 4x minus 2x becomes 2x, y minus y becomes 0, 27 minus 21 becomes 6, x equal to 3. So 3 is your variable charge. I'll resubstitute x equal to 3 in this equation. So 2x plus y equal to 21. 2 times 3 plus y equal to 21. 6 plus y equal to 21. Y equal to 15. Y was your fixed charge. So यहाँ पर x हो गया आपका variable charge, y is 15. Now let's read the question. Find the fixed charge. What is the fixed charge? Fixed charge is 15. And find the charge for each extra day. So for each extra day she will have to pay 3. She will have to pay rupees 3. So this is your variable charge per day. Very very important question guys, बहुत important question था ये, and I hope you understood it. So that's it for today's video. I hope you liked it and I hope you learned so many things. So do like, do share, do subscribe. Thank you.